simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. Means you want to see the expression for the transmission of wave which is traveling along positive x direction. And you know wave means energy. Progressive wave means wave which is being transmitted in a particular direction. Then plane progressive wave. In plane progressive wave, every particle of the medium will execute simple harmonic motion. Okay? If every particle during the transmission of wave, particle executes simple harmonic motion, then we will say it is a plane progressive wave. Okay? There is standing wave also. Wave gets restricted to the particular part of the medium. But we have to deal with plane progressive wave. Wave means energy, progressive wave means energy which is being transmitted, and plane progressive wave means during the propagation of wave, each and every particle of the medium will execute simple harmonic motion. And you know the wave motion, different characteristics of wave motion. In wave motion it is energy that travels, not the particle. Particle simply vibrate simple harmonically about their respective mean position. And particle velocity is different from wave velocity. And each particle starts vibrating a little later than its predecessor. And particle velocity is variable and wave velocity is constant. Okay? If you know these properties of the wave motion, here we are dealing with wave motion. Wave motion means transmission of energy, and here we are transmitting progressive wave, and it is simple harmonic progressive wave. Okay? And otherwise also we know the characteristics of wave motion. In wave motion, every particle will execute simple harmonic motion and particle will hand over energy to the neighboring particle. So let us consider the progressive wave. This is positive x direction. Here there is origin. Origin means the reference point. Origin means when wave will cross this point O, then we will start measuring the time and the distance traveled by the wave. This is wave. Actually it is a displacement time graph. Wave is being transmitted along positive x direction with velocity v, which will remain same throughout the transmission. Let the particle will transfer energy from particle to particle, and it will at a point P, where displacement is y, and at O, displacement is 0, T is 0. Okay. Let us say wave is going along positive x direction and it has gone to a distance x starting from O. O is origin. Origin means the point with reference to which you will measure time and distance. Okay? The particle is executing simple harmonic motion. Y is the displacement of the particle at point P, where wave has traveled a distance x starting from O. Okay? And wave is being transmitted in this direction, and wave transmission means particle of the medium, they are taking part in the transmission of wave, they are handing energy to the neighboring next particle. So here particle at the point, at the position P, has a displacement of y, and the wave goes from O to this position, covering this much distance, taking this much time. T is the time taken by the wave in going from O to this point. Means wave has traveled a distance x in time t, speed of the wave is v, and you know speed is equal to distance by time.
and it is constant. Wave is moving with constant speed, whereas particle speed is different. So here t will be equal to x by v. Now at this point P, whatever is happening, the same activity has already happened at O t time earlier. जो बच्चा इस वक्त 12th में है वो 11th के बच्चे को क्या कहेगा? अगर आप 11th का बच्चा 12th के बच्चे को कहता देखो मैं ये लेसन कर रहा हूँ, आप 12th के बच्चे को बोल रहे हो, 12th का बच्चा कहेगा तुम अब कर रहे हो, यही काम मैं 1 साल पहले कर चुका हूँ। 11th का बच्चा is lagging behind the 12th class student by time gap of 1 year. Now I am comparing particle which is executing SFM at O and at the point P. Okay, this point has received energy which started from O. Okay, so wave has taken t time in going from O to this point, and the moment this point will receive energy, it will start vibrating. Simple harmonic. Okay, but because it has received energy t time later than O, so what is happening at point P has already happened at O t time earlier. That means the particle at P will start vibrating t time later than the particle at O. जो P पर अब हो रहा है वो O पर t टाइम पहले हो चुका है। इसका मतलब P point is lagging behind the particle O by t टाइम। इतने टाइम ये पीछे चल रहा है क्योंकि इसको यहाँ से एनर्जी मिली। पहले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा, फिर एनर्जी को हैंड ओवर करेगा और यहाँ तक एनर्जी जाते इतना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब इस पार्टिकल को तो इतने टाइम के बाद एनर्जी मिली है ना। एनर्जी कहाँ से आई थी? रीजन ओ से आई थी। तो पहले ये वाइब्रेट किया, पहले इसको एनर्जी रिसीव हुई, टी टाइम के बाद इसको एनर्जी मिली। Therefore, the particle of the medium which is at P at time t is lagging behind the particle at O by this time. Got the point? जो यहाँ अब हो रहा है वो यहाँ इतने टाइम पहले हो चुका है क्योंकि एनर्जी इधर से इधर गई है और एनर्जी को यहाँ से जाने में इतना टाइम लगा है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है और स्पीड से वेव प्रोपेगेशन हो रही थी और ये वेव वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। इसलिए सिंपल फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम टी विल बी एक्स बाय वी। दैट मीन्स इसके और इसमें टी टाइम का टाइम गैप है। जैसे 12th और 11th के बच्चे में 1 साल का टाइम गैप है। जो आप अब कर रहे हो 12th का बच्चा 1 साल पहले यही काम कर चुका है। भाई पॉइंट, तो आप पीछे चल रहे हो 12th क्लास के बच्चे से। अगर आप 12th के बच्चे को चिढ़ाते देखो मैं ये लेसन कर रहा हूँ, मैं तो आप कर रहा हूँ, मैं तो साल पहले कर चुका हूँ, तुम तो 1 साल पीछे चल रहे हो मेरे से। इसलिए ये पॉइंट को जब एनर्जी मिली तो इसने वो वाले पॉइंट को कहा देख मैं अब इमोशन में हिस्सा लेने लगा हूँ, मैं वाइब्रेट करने लगा हूँ, SHM में ऑसिलेट करने लगा हूँ, तो वो बोलेगा तू अब कर रहा है यार, मैं तो इतने टाइम पहले यही काम कर चुका हूँ। तो P पॉइंट इज लैगिंग बिहाइंड देन O पॉइंट बाय इतना टाइम। Got my point? If you have this as the expression for the displacement of the particle at this point, so you can get the displacement of the particle at O by replacing this time by this time. क्योंकि x by v इसके और इसमें x by v टाइम डिफरेंस है।
जो अब यहाँ हो रहा है वो इतने टाइम पहले यहाँ हो चुका है। पहले ये वाइब्रेट करता है, फिर इतने टाइम के बाद इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद वेव यहाँ पहुँचती है, फिर ये पॉइंट वाइब्रेट करने लगता है। ओके, तो इसलिए जो यहाँ इस टाइम हो रहा है वो यहाँ इतने टाइम अर्लियर हो चुका है। एंड इफ दिस रिप्रेजेंट द expression for the displacement of the particle at the point P, then you can get the displacement of the particle at O by replacing this time by this. तो कितना टाइम इसमें घटा दो। ओके, हम 11वीं के बच्चे की बात कर रहे हैं, अब 12वीं के बच्चे को आप कह रहे हो कि हम ये काम करने लगे हैं, वो कहेगा आप तो मेरे से 1 साल पीछे चल रहे हो। ठीक है ना? इस टाइम 12वीं का जो बच्चा कर रहा है उसमें 1 साल माइनस कर दो तो वो काम 11वीं का बच्चा कर रहा होगा। गेट माय पॉइंट? तो यहाँ इतना टाइम लगा है वेव को यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एट टाइम भी ये है। एंड यू इफ यू वांट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट O, तो यू हैव टू रिप्लेस दिस टाइम t बाय t माइनस x बाय b। इतना टाइम कम कर दो इसमें। So therefore you will get this expression y is equal to a sin omega t will be replaced by t minus x by v. This is the displacement of the particle at point P at time t, and displacement of the particle at O at that time will be obtained by replacing this time by this time. Got my point? You will get the expression for the displacement of the particle executing SHM at O. So this is the equation of simple harmonic plane progressive wave traveling along positive x direction. अगर ये वेव नेगेटिव एक्स में जा रही होती तो यहाँ प्लस आ जाता। ओके, तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. Now you can express the same relation in different way. वो कैसे? y is equal to a sin, you can write omega by t, omega is equal to 2 by t is the time period, time in which particle of the medium completes one vibration. It is also the time in which wave travels the distance equal to lambda. ये आपको पता है। A is the amplitude. This is A. From here to here, this displacement is A. That is the maximum displacement. So y is equal to A sin 2 pi by t into t minus 2 pi by t into x by v. Open the bracket. Okay. Now what is V into T? You know, V is equal to n lambda, n is equal to 1 by T, V is equal to 1 by T into lambda, and then from here V into T will be lambda. So this V into T can be replaced by lambda. So this equation will become y is equal to a sin 2 pi by t into small t minus 2 pi by lambda into x. V into t has been replaced by lambda. Okay. Now here 2 pi by t, as you know, is omega, angular frequency, and 2 pi by lambda, let us say
is equal to k. 2 pi by lambda is constant. So this expression will become y is equal to a sine 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x. This will become y is equal to a sine omega t minus ax, where omega is 2 pi by t and a is equal to 2 pi by lambda. So this is standard form of simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. Standard form. This is standard form of simple harmonic progressive wave. Traveling along positive x direction. So, one form of simple harmonic progressive wave, standard form. Another way to express plane progressive wave is that y is equal to a sine you take 2 pi by t common here, 2 pi by t, so that will be t over here, then 2 pi by t, here there is no t, so t ऊपर आएगा, then there will be lambda. Two pi by t common, here there will be t, here 2 pi multiply and divide by this by dt. So 2 pi by t common, then t by lambda into x, t by lambda into x. Okay. You can express this in other form also. You take only 2 pi common, only 2 pi common. You will have another form. Start from this expression, take only 2 pi common, okay, we will get here p by t, 2 pi common, so here we will have x by lambda, okay. So these are the different form of, standard form of simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. An expression for the simple harmonic progressive wave traveling along negative x direction, you have to replace this minus sign by plus. So therefore, y is equal to a sine omega t plus kx is standard form of simple harmonic progressive wave traveling along
negative x direction. So in problem you will be given some simple harmonic progressive wave and you have to compare with any of these standard form. जैसे आप करते थे ना quadratic equation है तो आपको given equation है, you compare it with the standard form of quadratic equation, find out ABC, okay, and then roots and then पहले डिस्क्रिप्ट निकालो फिर रूट्स निकालो, तो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको दी है, फॉर एग्जांपल आपको ये दी है y इज इक्वल टू 314 साइन ऑफ 314t माइनस 0.025x। If you are given that some simple harmonic progressive wave is being represented by this equation, y is equal to 314 sin 314t minus 0.025x. Okay? Here, remember, this x and y, they may be given in different system. For example, y is the displacement of the particle. X is the distance traveled by the wave in the time t. Particle executes simple harmonic motion and wave travels along a straight line with constant speed. Okay? And this you have to see first of all the sign, just to see the direction of propagation of the wave. It is going along positive x direction or negative x direction. अब यहाँ क्योंकि माइनस है तो this wave represented by this equation tells us the direction of transmission of the wave, that is in the positive x direction, number one. Number two, you will be given is y is the displacement of the particle which is executing simple harmonic motion. It may be given in, let us suppose, centimeter, and x, which is the distance traveled by the wave. This may be given in meters. Clear? So y is the displacement of the particle executing SHM, whereas x is the distance traveled by the wave in the same time t. पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से टी टाइम में इतनी दूर जाएगा, लेकिन वेव उसी टाइम में इतनी दूर जाएगी. ओके, नो दिस इक्वेशन विच इज गिवन इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि इसकी शक्ल जो है ऐसे दी हुई है. ब्रैकेट के बाहर 2π/t भी नहीं है, 2π भी नहीं है. ओके, ये जो क्वांटिटी है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको फेज कहते हैं. फेज, व्हाट इज फेज? हम इसको लेट अस सपोज पाई से डिनोट करते हैं. पाई, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. फेज में टी भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, जो वेरिएबल है. With the passage of time, distance traveled by the wave will be different. X will change with t. So therefore, ये जो क्वांटिटी है ओमेगा टी माइनस की है, इसकी प्लेस वैल्यू देखो, इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए. ये एंगल की जगह बैठा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा, ये थीटा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. ओके, और SI यूनिट रेडियन है. थीटा इज यूनिटलेस नहीं है, थीटा हैज ए यूनिट बट इट इज डायमेंशनलेस. डायमेंशन नहीं है, M0 L0 T0 इसकी डायमेंशन है, और इसका यूनिट ऐसे सिस्टम है रेडियन है. और यहाँ जब हमने इस आइटम को देखा तो साइन के आगे लिखा है, इसका प्लेस देखा, इसका प्लेस क्या है, एंगल की जगह बैठा है ये क्वांटिटी. इसलिए इसको हम मैथ वाले इसको आर्गुमेंट कहते हैं. आर्गुमेंट means phase, angle. Okay, so phase is physical quantity which will give you the direction of propagation at a particular time
what is the position of the wave. कि टी टाइम पर वेव कहाँ है, एक्स डिस्टेंस दूर है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था ओरिजिन से। ये क्या बता रही है कि टी टाइम में वेव इतनी दूर जा चुकी है, किस डायरेक्शन में जा रही है इससे पता लगेगा। ओके, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, ये पार्टिकल का टाइम टेबल है, ये वेव का टाइम टेबल है। जैसे टाइम टेबल से भी ये पता लगता है कि इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो ये फेज ये बताएगा कि इस वक्त वेव कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट से। टाइम कौन सा है, टी। वेव कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, एक्स डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में जा रही है वेव, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसने बताया। स्पीड क्या है, यहाँ से स्पीड भी पता लगेगी। यू नो, ये ओमेगा है, के है, इनको डिवाइड करो, फाइंड आउट ओमेगा बाय के, इट विल बी लैम्डा बाय टी, 2 पाई विल गेट कैंसल्ड, and 1/t is frequency, and frequency into wavelength is velocity of the wave. That means omega by k, this gives you the velocity of the wave. So therefore this item, which is called the phase or the argument, it is such a physical quantity which will help you in finding the position of the wave at a particular instant of time and its direction of propagation. किधर जा रही है, कितनी दूर जा चुकी है, किस टाइम में और किस स्पीड से जा रही है, तो सब इस चीज़ से पता लगेगा, जिसको फेज बोलते हैं। फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट ए बेसिक क्वांटिटी, डिराइव्ड है। बोलो, बेसिक है कि डिराइव्ड है? डिराइव्ड। कैसे पता लगा? मैंने बताया है ना, मैं तो आपको चेक करने के लिए कहा ये कि मेरी स्टेटमेंट सही है कि गलत है। मैंने क्या ये भी तो बताया ना कि क्या है, एंगल है। तो एंगल बेसिक क्वांटिटी है कि डायमेंशनल डिराइव्ड क्वांटिटी, बताओ। एंगल इज बेसिक क्वांटिटी, जो आपको फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बता रखी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंगल है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, करंट है, ये सारी बेसिक क्वांटिटी है। तो ये जो आपको ये फेज बता दिया, इसका नाम बदल दिया, ये फेज है, ये पार्टिकल का या वेव का टाइम टेबल है। इस फेज से हमें ये पता लगना है कि वेव इस वक्त कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, कहाँ पहुँच चुकी है, ये क्वांटिटी बताएगी। पर उसका प्लेस से हमें प्लेस वैल्यू से पता लगा कि ये तो एंगल है, ये तो डायमेंशनलेस है, एंगल तो बेसिक क्वांटिटी है। देयरफॉर फेज इज ए, नाम बदल दिया हमने, ठीक है, लेकिन इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी, बेसिकली इट इज एंगल। ओके, इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसे सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन है, और ये प्रोग्रेसिव वेव में जो ये आइटम है, इसको हमने अभी कह दिया ये फेज है, पर इसकी प्लेस वैल्यू देखिए एंगल वाली है, और एंगल को बेसिक क्वांटिटी माना जाता है, डायमेंशनलेस माना जाता है। ऐसे ही सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन माना जाता है। पहचानो इसको, इसने बेस बदला हुआ है। ओके, नंबर डिजिट मान लो नंबर 2 ही होता है, लेकिन कई जगह वो 200 का काम कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू उसकी 100 वाली है। कई जगह वो 10th प्लेस पे बैठा है, नंबर तो 2 ही है, 20 का काम करेगा। अगर यूनिट प्लेस पे बैठा तो 2 ही है, वो नंबर तो वही है ना, प्लेस वैल्यू बदल गई ना। तो यहाँ भी क्वांटिटी वही है एंगल, लेकिन यहाँ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में ये जो साइन के आगे चीज बैठी है, इसको हम ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम क्या कह रहे हैं, ये फेज है। लेकिन बेसिकली क्या पहचाना, ये एंगल है, एंगल फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट रेडियन है। पहचानो इसको। तो फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which will give you at a particular instant the position of the wave, direction of propagation of the wave, and speed of the wave. So omega by k, what is omega? The coefficient of t.
What is k? The coefficient of x. And otherwise, what is omega? 2 pi by t. What is k? 2 pi by lambda. And if you divide omega by k, you get lambda by t. And 1 over t is frequency. The frequency to wavelength, that gives you the speed of the wave. So therefore, omega by k. Here, this is omega and this is k. The coefficient of t is omega. Coefficient of x is k. And omega by k is the speed of the wave. So therefore, if you compare this given equation with the standard equation representing simple harmonic progressive wave, then you will find 314 is the amplitude. Amplitude means maximum displacement. Maximum displacement of, यहाँ दो चीजें मूव कर रही है, वेव और पार्टिकल. पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और वेव स्ट्रेट लाइन में जा रही है कांस्टेंट स्पीड से. तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो यहाँ क्या यूनिट दिए हैं? पार्टिकल के डिस्टेंस का क्या यूनिट दिया है? सेंटीमीटर. तो फिर अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं और ए हमारा आ जाता है 314, तो यूनिट क्या होगा इसका? ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू है. Therefore, amplitude will be 314 centimeter. Y is taken in centimeter, x is measured in meter. Let us say time in second. This will be given in the problem. Okay? But you must know what is the basic nature of these physical quantity. ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का है. वेव ने तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड बहुत ज़्यादा है. पार्टिकल वेलोसिटी तो डिफरेंट है, वो तो वेरिएबल है, वो तो जीरो भी बन जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो मैक्सिमम होती है एट द मीन पोजीशन. लेकिन वेव ट्रैवल विद यूनिफॉर्म स्पीड. और वेव तो बहुत तेज आ रही है, लाइट वेव है या साउंड वेव है, स्पीड तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ओके, so therefore given equation is to be compared with the standard form, and I have given you three standard form of simple harmonic progressive wave traveling in a particular direction. Clear? Now I have told you the phase also. The phase is a function of x and t given by omega t minus kx. You can write this like this: 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x is phi, is phase. This is phase. Then there is another quantity, epoch. Epoch. What is epoch and what is the difference between phase and epoch? Epoch is, which is denoted by phi naught, is initial phase. Initial phase. Initial phase means the value of phase at value of phi at t is equal to 0 and x is equal to 0. Here, in this phase, if you put t is equal to 0 and x is equal to 0, in this case especially, epoch will come out to be 0. When t is 0, this item will be 0, and x is 0, this will also finish. Okay? So t 0 और x 0 कहाँ लेते हैं? At the origin, at the starting point of the wave, at the point where observer is sitting. ऑब्जर्वर कहाँ है? वो कहाँ से देख रहा है बैठ के? ओके, तो जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया, वेव तो प्रोग्रेस कर रही थी. मान लो ट्रैफिक जा रहा है, आप उसको देख नहीं रहे, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे, आप किसी गाड़ी को देखते हैं, जब आपने देखना शुरू किया तब आप उसको t0 मानेंगे.
और उस वक्त गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो मानेंगे, हालांकि वो पीछे से आ रही है, तो पीछे से जो डिस्प्लेसमेंट है, पीछे वाला जो टाइम है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इपोक निकालना चाहते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, जिस वक्त आपने इवेंट को देखा है वो टाइम t=0 माना जाएगा, और उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 माना जाएगा। तो ऐसा हम ओरिजिन पे लेते हैं। जैसे आपको वेव, प्रोग्रेसिव वेव को ऐसे दिखाया, ये ओरिजिन था, यहाँ x भी 0 था, t भी 0 था। मीन्स observer will start routing the value of t and x when wave will cross O। जब वो पीछे से आ रही है, जब O पर क्रॉस करेगी तब टाइम नोट किया जाएगा, तब डिस्टेंस नोट किया जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। जैसे यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा? अब दिल्ली का बस स्टैंड देखते हो, या रेलवे स्टेशन देखते हो, या एरोड्रोम देखते हो। अगर बस स्टैंड दिल्ली का कितनी दूर है यहाँ से, तो फिर चंडीगढ़ के बस स्टैंड से दिल्ली का बस स्टैंड का डिस्टेंस देखो। जो बस स्टैंड इज द रेफरेंस पॉइंट, बस स्टैंड टू बस स्टैंड डिस्टेंस जो माना जाएगा, तो आप चंडीगढ़ के बस स्टैंड से दिल्ली के बस स्टैंड का डिस्टेंस मापेंगे, वो आपको चंडीगढ़ दिल्ली का डिस्टेंस बताएगा। अगर रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है दिल्ली का, तो फिर चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से दिल्ली के रेलवे स्टेशन को मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस। एरोड्रोम कितनी दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितनी दूर है, तो फिर चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से दिल्ली के एयरपोर्ट का आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या आपका एयरपोर्ट। कितना टाइम लगा यहाँ से दिल्ली जाने का? जब फ्लाइट स्टार्ट होगी चंडीगढ़ एरोड्रोम से, तब t=0 टाइम वहाँ से टाइम काउंट किया जाएगा। जब उसको 11:30 बजे हो, उसको 0 मान के चला जाएगा, और फिर देखा जाएगा कितना टाइम लगा एयरक्राफ्ट को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचने में। तो ये ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहीं से हमने देखा कि वेव इतनी दूर गई है, वेव हैज ट्रैवल्ड दिस मच डिस्टेंस इन दिस मच टाइम, wave was going along positive x direction। ये हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन ले ली, ओके। तो wave has gone to a distance x, there the particle was at p having displacement y। The observer is measuring x and y. X is the distance traveled by wave and y is the displacement of the particle which is executing simple harmonic motion during the transmission of wave। Okay, so x =0, t =0 will be at the point O, and here x is x, okay, so t is x by v। Okay, you have to keep into consideration the different characteristics of wave motion। Wave motion, what is happening? I told you 10 points। क्या हो रहा है wave motion में? It is energy that travels, not the particle। फिर particle velocity और wave velocity they are different। क्या difference? Wave velocity is constant, but particle velocity is different at different time। Particle is executing as such, when it goes to extreme position, velocity is temporarily 0। When it crosses the mean position, crosses with the maximum speed, but wave moves every time with the same speed। तो ये wave velocity है, this is the distance upon time, ये constant है। और here you have taken the expression for the simple harmonic progressive wave as y = a sin omega t minus kx। So this is the displacement of the particle। Now if I ask you find out the velocity of the particle, the velocity of the particle, let it be u, will be given by dv by dt, and the wave velocity will be dx by dt। वेव तो x डिस्टेंस कवर कर रही है t टाइम में, और पार्टिकल सेम टाइम t में y डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो y by t,
वेव की वेलोसिटी चाहिए तो x by t. Okay, and if you have small time interval and small displacement, then the velocity of the particle, this is particle velocity, and this is wave velocity. Wave velocity is constant, ये constant है. And what is the relation between wave velocity and particle velocity? We can find out. You have one relation for wave velocity v is equal to omega by k, where omega is 2 pi by t and k is 2 pi by lambda. Okay, this is lambda by t or n lambda. And then wave velocity during propagation of wave velocity is constant, it is not variable. It is given by omega by k, or v is equal to dx by dt also. But particle velocity, which is u, is dy by dt. So you will get particle velocity by differentiating this relation, standard form of progressive wave. इसको differentiate करो, you will get differentiation of sine is cos, then you are differentiating y with t. Okay, a is the amplitude which is constant, will remain a sine differentiation is cos, then you have to differentiate this portion also with respect to time. This item doesn't contain time. K is 2 pi by lambda. Okay, into x, it is independent of time. Its differentiation will be 0. And differentiation of this item will be omega with respect to time. ये omega आ गया. This is particle velocity. And what is the maximum value of particle velocity? Omega a. The maximum value of cos omega t minus kx is 1. Regarding particle, you can have particle velocity at any time t, or particle velocity, maximum particle velocity, because particle velocity is variable. Okay, and you cannot talk about maximum wave velocity. Wave velocity is uniform. वो तो सेम रहती है, उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, तो जीरो भी नहीं बनती. क्लियर? तो इसलिए ये पार्टिकल वेलोसिटी का, पार्टिकल का टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट y है, तो dy by dt will give you particle velocity. So for that you have to differentiate y with respect to t. Okay, ये आ गया. यहाँ से cos and sin ये फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिक हैं, जिनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है. So when cos will be maximum, then u will be maximum. So maximum particle velocity will be omega a. Okay, and now you can find out particle acceleration also. Particle acceleration. Particle acceleration will be differentiate velocity. इसको differentiate करो. Hello. हाँ भाई. Particle acceleration. You cannot talk about velocity, this wave acceleration, because wave velocity is constant. Differentiation will be 0. You can talk about only particle acceleration and particle velocity, which is variable. So particle acceleration will be du by dt.
particle velocity. Okay, the rate of change of velocity is acceleration, so differentiate u with respect to t. It will give you differentiation of cos will be minus I, and omega a will remain as it is. Then you have to differentiate this with respect to time, then another omega. Second term is independent of time, differentiation will be 0, and omega t differentiation with respect to time will be omega. So it will give you minus omega square a sin omega t minus kx. Or you can write this as minus omega square, this item is y. A sin omega t minus kx is displacement. And from here you can get the maximum value of acceleration, that is minus omega square a, because sin has its maximum value 1. Okay? Done? Yes.